Good evening, dear educators. Good evening, ma'am. Good evening, Good everyone. evening, ma'am. Hi, good evening, ma'am. Hello, how are you all? I hope you all are fine. Good evening, ma'am. Good Yes, Good evening. ma'am. evening, good evening, Good Yes, evening, ma'am. good evening. So basically, we are here today, like maybe So we are here today for a workshop which is about understanding today's learner, that is Gen Alpha. Basically, this thing is very common nowadays, right? Matlab, we all as an educator must be facing lot of difficulties, or I must say that we must be discussing lot of things daily life में. ये सब कुछ हम बहुत generally discuss करते हैं, है ना? कि earlier times पे the students were like this, the students were like that, now they are like this, now they are like that. So am I audible, everyone? yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. Okay. So basically, today's major topic that I am having is understanding today's learner, that is Gen Alpha. So if we talk about simply means, I guess I don't know you all, but I know that you all must be having 5, 10, 20 years of experience or even more than that in teaching or in any of the like your subject field, right? So you must have dealt with number of students. Am I right? Yes, ma'am. Yes. Yes. So basically, we all must have been following or we must have been met with the number of students from past 10 years, 20 years or 25 years or even more than that. So basically there are lot many changes in the students that we have seen, right? As an educator, सबसे ज़्यादा मतलब वही है कि if we talk about students or children, so half of their time is spent at their homes and half of their time is basically spent at school only with all of us. So there are lot many things that have changed. So today what we are going to discuss, we are going to discuss that changes only, right? So very first thing is starting with the first slide if I say. So I want to ask you all that who was your most memorable teacher and why? Anybody of you if you can answer that who was your most memorable teacher and why? Anybody? No Well, one ma'am, I'll remembers. take the opportunity Yes, with sure. your permission. Yes, ma'am. Yes, I sure. still remember my English teacher. She was really Okay. influential, Okay. primarily for the reason that she had a great command on her subject. And second, she Okay. would just relate it so well with real life that at that Okay. point of time we really don't did not know as students that what is the connection behind connecting it with real life. Now being an Right. educator, when you know that connecting it to real life is so much important, this is the Yes. first USP to have a grip of your learners. So this Yes. is what I really remember. And she would make the class so amazingly fun, add a fun element in the class that we would never Okay. get bored. And Okay. above all, her dress, the aesthetics, her dress sense Okay. was out of the box. I mean, she Okay. was Okay. truly a brand for the being an English teacher. Okay. So basically, if I say that, thank you so much, ma'am. So basically, if I say that we remember our means our favorite teacher, you can say our most memorable teacher is either the one like for example जो हमें बहुत मारते थे या तो वो हमें बहुत ही ज्यादा याद रहते हैं और the ones जिनका हमें teaching बहुत पसंद आता था. This is something ma'am has shared like कि the English teacher who used to teach connecting with the real life things, that teacher she remembers. So this is what exactly nowadays the students want. Somewhere all of our teachers were not like that कि every time they used to connect with real life. There were number of teachers जो boring सी books से हमें पढ़ा देते थे and we used to learn those things. We used to you can say we used to just do that rote learning and we used to come into the classes and give those tests and we would have scored good or bad whatever. But nowadays the students that we have, that is Gen Alpha. Now basically what is this Gen Alpha, Generation Alpha, Gen Alpha जो हम ये word use करते हैं, who are they? So they are not like मतलब these are not like something कि जो हम बोले कि मतलब बहुत ऐसे हैं कुछ बहुत different है. No, actually they are also human beings, they are also kids actually. They are kids only. But who are these Gen Alphas? So in this session we are going to cover कि what how these Gen Alpha learners are like,
Then further we are going to study that how these students are different in learning, means what difference we need to create when we are learning. And then further we have what are the strategies that we can work upon so that we can be that one of the most memorable teacher of our students. And at the end, how we as a teacher can adapt so that we can become that हमारी जो एक teaching है वो timeless बन पाए. Starting with the first thing, that is who is this Gen Alpha. So basically Gen Alphas are those who are born after 2010, that is 2010 के बाद के all those young kids that are born, they all are they all come under Gen Alpha. So they are the digital natives. You must have heard कि nowadays so it's like कि the child is born मतलब after, and the child knows how to use the phone. Basically if I मतलब I am not that means you can say having that early generation वाला student नहीं हूँ मैं. Then also like if I compare myself with my younger ones, so they are like they know more मतलब much better than me. फोन वो इजीली यूज कर लेते हैं. The junior ones, 3 4 years kids, they know how to download that games and how to use that phone. Like before even they know how to speak, they know how to use that phone. So basically this generation is more about digital things. They are more about like why to go to some shop, just blink it the things, why to go somewhere, just order it online. This is something this generation is all about. And they're visual and fast learners. So basically what ma'am said exactly, that's means basically they are not like that ki you just go and teach them, you just read out the book and explain them, and they will be like ki ma'am you are very good in that, right? So okay, okay, I'll go with the Hindi as well. So basically ये मतलब ऐसे नहीं है कि if we simply say that कि they are like हम उनको simply कहेंगे कि चुप कर जाओ क्लास में, be quiet, बात नहीं करोगे, एंड फिर आप मतलब आप पढ़ा रहे हो एंड दे आर लिसनिंग वेरी क्वाइटली. आपको अपनी मतलब टीचिंग टाइम पे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती होंगी इन विच यू मस्ट हैव सीन कि बच्चे कहते हैं मैम ये तो यूट्यूब से पढ़ लेंगे हम, ये तो मैम हम यूट्यूब पे आज लेक्चर सुनेंगे जाके. मीन्स व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू डू इज, ये चीज है क्या, दिस इज समथिंग कि द जेन अल्फा वंस दे वांट एक्साइटमेंट, दे वांट सम इंटरेस्टिंग थिंग्स इन एवरीथिंग. मींस दे आर द वंस जिनको नॉर्मली चीजें करना पसंद ही नहीं है. दे वांट कि हर चीज जो है वो बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग वे से हो, कुछ नया हो, कुछ डिफरेंट हो, विच कैन अट्रैक्ट देम. सो that is something ki they are the visual and even the fastest learners that we have today. So just a second. So now what are the key characteristics that we were discussing? First thing is what matlab key characteristic means some of the problems that we are facing nowadays in these students. One is the short attention span. That is, I must say that like if we are having a lecture of 35 to 40 minutes, these students are like, ma'am, if 15 minutes ka lecture is over, now the next 15 minutes are for talking and all. Means let's chill, let's talk. So yes, so they are like short attention span है इनकी. You cannot make them sit for long and long hours, like 2 hours, 3 hours continuously, and ask them to sit and do your homework, do your classwork. Means they want something interesting in between, like short span के बाद. Even if they study at home, not only at school, but you must be having your kids, and you must have felt that कि after every half an hour your kid wants your mobile phone, और कोई ना कोई बहाना बना के कि मुझे कुछ खाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अभी थोड़े टाइम का रेस्ट चाहिए, मुझे कुछ खेलना है. So these type of things must be felt in the students nowadays. Then further, next thing is tech emerged from birth. That is, we discussed कि we must have seen छोटे छोटे बच्चे हैं, they are doing what exact means even some of the students are like they know phone more than us, they know how to use it, they know means they just open it and they just start searching it, they know how to use the reels nowadays. matlab if we use insta or we are using facebook, so we all must have like seen कि there are number of students, छोटे छोटे 3 3 4 4 साल के बच्चे हैं जो रील्स बनाते हैं. they are like मतलब expressions उनके, the way of talking they have, they know that they are holding a phone and they are saying ki, okay now share, subscribe and this and that. So this is how this generation is, that they are really really tech savvy. Then next thing is
Okay. Next is need instant feedbacks. Now let's talk about this. What is this? Like कई बार क्या होता है क्लास में हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और हमारा जनरली क्या होता है कई बार फ्लो बना होता है और हम बच्चे ने किसी ने आंसर किया तो भी समटाइम्स फॉरगेट टू से और वी फॉरगेट टू अप्रिशिएट दैट चाइल्ड. हम उसको बोल देते हैं ठीक है बच्चे बैठ जाओ ओके. So this is something that doesn't work with these kids. They are like they need instant feedback. They will come to you now and then. Ma'am, this is okay. Ma'am, is this good? Ma'am, this is fine. Shall we go with this or shall we not go with this? ऐसा हम कर सकते हैं. So this is something कि इन students को क्या चाहिए? They need instant feedbacks. Like if you have given some task, अगर आपने कोई task दिया है और आप उनको वो टास्क आपके पास करके लेके आते हैं यू कैन नॉट जस्ट मेक देम लाइक कि अभी बैठो हम बाद में बात करते हैं. दे आर ऑलवेज लाइक कि मैम आप बताओ इसमें क्या चेंजेस हो सकती हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं. सो दे नीड इंस्टेंट फीडबैक ऑफ एवरीथिंग. विजुअल एंड स्टिमुलस ड्रिवन. दिस मीन्स स्टिमुलस का मतलब क्या होता है स्टिमुलस मीन्स एनी चेंज दैट इज देयर इन द एनवायरमेंट. So they are like means whatever changes are taking place in the environment they actually follow them, they actually like observe them, they have a very good observing power. Means if sometimes we मतलब एज अ टीचर समटाइम्स हम उस विजुअल्स को या हम उस ऑब्जर्वेशन को नहीं देख पाते हैं जितना ये अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं. इवन दे आर द लाइक्स कि मतलब हम अगर कभी ट्राई भी करते हैं ना इनके सामने ओवर स्मार्ट बनने का हमारी स्मार्टनेस दिखाने का तो समटाइम्स दे आर स्मार्टर देन अस. राइट सो दे बिकम स्मार्टर देन अस एंड दे ट्राई कि मैम ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसा हो सकता है आपने इसलिए ऐसा किया. मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ वी से दे आर आस्किंग अस अ क्वेश्चन एंड फॉर एनी रीजंस if I don't know the answer or if I need to search it out, you cannot say them कि we'll discuss tomorrow. They'll instantly get to know कि हमें आंसर नहीं आता है. So somewhere they are very much you can say observing. So visuals इसीलिए इनको visuals attract करते हैं. Whatever things you show them ये बहुत quickly learn करेंगे. Socially conscious है. Socially conscious का मतलब क्या हो गया कि दे आर मीन्स वट एवर इज हैपनिंग इन द एनवायरमेंट दे आर द वंस जिनको सबसे पहले पता होगा. दे आर द वंस जिनको सबसे पहले चीजों की नॉलेज हो जाती है कि मैम यहाँ पे ऐसा हुआ है यहाँ पे ऐसा हुआ है. नॉट अबाउट टोटली ऑल ओवर इंडिया बट इफ आई टॉक अबाउट देयर फ्रेंड्स द टीचर्स. आज एक टीचर एब्सेंट है ओ मैम यू नो दिस टीचर इज एब्सेंट आज इन्होंने ऐसा करना था आज मैम ने यहाँ जाना था. मतलब दिस इज हाउ दे नो ईच एंड एवरीथिंग इवन बिफोर वी नो. Sometimes so it happens that the information that we should get from the school authorities we get that same information from the kids. They tell us ma'am कल छुट्टी है and we get to know अच्छा ऐसा भी है who told you ma'am we know कल it is a off. So this is how means this generation is changing. Earlier we as a student used to totally depend upon our teachers. We were so shy you can say कि we were not even able to connect with the teacher if I have to ask a question. तो sometimes हमारे मन में एक fear होता था कि don't know what ma'am will say. Or you can say if a teacher crosses by us तो हम एक okay so like मतलब what actually happens कि this is something मतलब you can simply say कि उस टाइम पे क्या होता था क्रॉस कर रहा है टीचर तो वी यूज टू जस्ट विश दैट टीचर और हम दोबारा शायद उनसे बात भी नहीं करते थे वी यूज टू हैव दैट मच फियर. बट नाउ अ डेज दीज किड्स आर दे आस्क फॉर मैम आर यू ऑन सोशल मीडिया मैम आर यू देयर मैम यू नो व्हाट दिस हैपेंड मैम यू नो दैट हैपेंड. They even generally simply message on WhatsApp to ask any of the things. So this is how this generation is. Means this is how this generation is like different from ours, we can say. So what are the classroom challenges that you must be facing because of these things? First thing is the distractions. There are a lot many distractions. The most common distraction that we have, the most common distraction that we have is the adolescence period की attraction that these kids have. Means इनमें क्या है मतलब whatever is what मतलब basically what is there the same thing that they are attracted to the matlab, other gender the opposite gender and they don't know. Means even a kid of class 6 or 7 they are actually attracted to the opposite gender. Not only this distraction but there are other lot many distractions. For example the social media that they use, the Instagram, the Snapchats, the mobile phones, because after lockdown earlier so it was like we used to get the mobile phone the personal phones after graduation or somewhere after our post graduations. But nowadays those kids are having that sorry
Okay. So nowadays these kids are having that, you can say, mobile phones even at the age of like sixth, seventh ki matlab usme aake they are having their own mobile phones. So this is the biggest distraction that they hold. और ड्यूरिंग द क्लासरूम ओनली इफ वी से कि क्लासरूम में कौन सा हमारे पास मतलब मोबाइल फोन होता है सो व्हाट इज द डिस्ट्रैक्शन यू मस्ट हैव सीन सम चिल्ड्रन आर डे ड्रीमिंग इन द क्लास दे आर सिटिंग लाइक दिस एक्टिंग लाइक कि बुक ओपन है मैम को कौन सा पता लग रहा है जी हम बैठे हैं वी आर सिटिंग एंड वी आर जस्ट लुकिंग एट मैम एंड वी आर जस्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स कि आज यहाँ पे घूमने जाएंगे आई विल गो हियर आई विल बंक द ट्यूशंस आई विल हैव टू गो देयर दिस इज समथिंग दी स्टूडेंट्स डू means this is how they got get distracted or in the class during a class for example if you are asking a question to or if you are scolding a child means अगर आप किसी बात पे किसी बच्चे को scold कर रहे हो तो everyone will get distracted for that 5 to 10 minutes and they will keep on talking about that only or a major distraction if I talk about if a teacher called a student outside the classroom now the student enters back in your class you will see all the students looking at that child कि what happened मैम ने क्या बोला क्या हुआ they all want to know they are not interested in your class now they all are interested in कि yes what exactly happened there with you then is the mobile dependency that I have just discussed that how this mobile dependency is there the chat GPT that we have means basically the chat GPT that we have is what something like आपने homework दिया है मैम chat GPT करेंगे अभी हो जाएगा then even we as a teacher use these tools we as a teacher we also use these tools for our basic needs but then again they are the children they don't know that what how and why and when they have to use it so they are using it even for the basic things that they own can do even the mobile phones youtube that we have so basically youtube पे क्या है मैम टॉपिक समझ नहीं आया इट्स ओके वी हैव यूट्यूब हम यूट्यूब पे लेक्चर सुन लेंगे this is something that is there so this is the second classroom challenge we are facing and then is the emotional sensitivity means this is something we need to actually discuss you must have seen कि earlier times पे ना even we used to scold a child we used to hit a child means sometimes even the parents were like that कि ma'am it's okay if he or she is doing something wrong then you are allowed to do anything but the only thing is that a child should be like मतलब a good human being a child should become a good human being that's it that's all we want but nowadays even if you scold a child even if we are not hitting them obviously we are not allowed to but even if we are scolding a child na, what actually happens is that either the child distant from us हमसे वो दूर होना start हो जाता है या you can say that the child sets something in the mind कि नहीं मैम ये तो डांटती ही हैं ये तो ऐसा बोलते हैं yes sometimes what happens that the child feels like shy or you can say कि sometimes the child feels offensive कि मुझे पूरी क्लास के सामने डांट दिया this generation alpha is having that is they are actually very sensitive about these things कि मैम ने ऐसा कैसे बोल दिया हमें sometimes the bigger ones like the students of class 10th and 11th they even say अब बाहर आके मिलना वो कई बार कुछ कुछ ऐसे टीचर्स या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हमारे साथ होते हैं when they say कि मैम कोई बात नहीं हम आपको बाहर देख लेंगे या सर आपको हम बाहर देख लेंगे this is something what this is the emotional sensitivity they have means they are so sensitive about their image the image that they hold that the self respect that they hold they are like कि आपने हमें पूरी क्लास के सामने डांट दिया हम तो अब आपसे मतलब ऐसा आपने कैसे कर दिया so this is another challenge we are facing that if as a teacher we know that we are not saying anything wrong to them हम उनको ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहे हैं हम उनको जानबूझ के कुछ टारगेट नहीं कर रहे हैं but somewhere that emotional sensitivity is there in these generation alpha kids so this is something we need to cope up with the next thing is okay. So if I ask you, maybe this is becoming longer. So if I ask you, there are two methods shown in this, A and B. So maybe the difference is clear. Let me just bigger the screen. So this is method A, that is the lecture method that we have. And this method B, that is the activity-based learning. You can say experiential learning. Can you just suggest me ki, what are the changes that you can see in these two pictures? Matlab, what are the differences, sorry, you can see in these two pictures? Just a basic change I want from you. Anybody of you, if you can answer, that what is the change that you can see? What is the difference that you can see in these pictures?
So there are two like pictures we have. अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। ये जी ये जो दोनों मैथड है, हाँ जी। इनमें जो लेक्चर मेथड है, इसमें तो टीचर जो है वो बोले जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, और बच्चे हाँ जो हैं जी वो सर। पैसिव बने हुए हैं। लेकिन जो हाँ जी। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, हाँ जी इसमें सर। टीचर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्टूडेंट उससे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब राइट। लर्निंग बाय डूइंग तो ज्यादा लर्निंग होगी, क्योंकि स्टूडेंट वो काम खुद कर रहे हैं। राइट। हाँ जी सर, हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। सो दिस इज समथिंग दैट द क्यूरियोसिटी दैट इज देयर इन द मतलब ऑन द फेसेस ऑफ दोस किड्स, द क्यूरियोसिटी इफ यू सी दैट द टीचर इज डूइंग एंड द स्टूडेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड कि मैम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज शी डूइंग हियर, दे आर जस्ट सिटिंग लाइक मतलब वो ऐसे बैठे हैं कि ठीक है कब लेक्चर खत्म हो, कब हम காலையில जाएं। பிரேயர் ठीक பண்ணவும் है। இல்லை என் கையில எத்தனை பதட்டம் தெரியுமா எனக்கு एक भी So this is डिस्टर्बेंஸே இருக்காது something that is there. The difference between, you can say now, matlab if I have to compare, that this is the earlier method that we used to use to teach the students, the earlier generations, and this is the like added on, something that is added on. Like earlier it was there. पहले भी ये था, ऐसा नहीं है कि एक्टिविटीज पहले नहीं होती थी, बट नाउ अ डेज शायद आपके स्कूल्स में भी ऐसा होगा, आपकी वर्क प्लेसेस पे भी ऐसा होगा कि अब ये ज्यादा बोला जाता है कि आप मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर फोकस करो, यू नीड टू मतलब प्लान एक्टिविटीज, यू नीड टू प्लान एक्टिविटीज फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर सब्जेक्ट. So this is the major difference that is there, that your students will be more interested in learning, right? So this is the reason that why that traditional teaching that fails nowadays, fails in a way that why students are not interested in simply learning the things, why there is a gap or why there is a distraction, because these students need active learning. They are not the passive learners. They are not the ones who will sit and patiently listen to us. They are the ones कि आप दो हम करते हैं. We'll do the things, right? We want to try. If I take a simple example, हमने मतलब मोस्ट ऑफ यू हैव लाइक हर्ड और यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में स्टडी किया होगा. सो हम मतलब जब भी एग्जांपल देते हैं तो हम कहते हैं ना कि पेपर को टीयर कर दिया तो दैट इज अ फिजिकल चेंज, एंड जब हमने पेपर को बर्न कर दिया तो दैट इज अ केमिकल चेंज. नाउ माय क्वेश्चन इज कि आप मोस्ट ऑफ द टीचर्स के साथ ऐसा ही हुआ होगा कि हमें सिर्फ बोल के बताया गया कि हमने पेपर टीयर कर दिया तो वो फिजिकल चेंज है, हमने पेपर को बर्न कर दिया तो वो केमिकल चेंज है. Nowadays these kids want कि आप ये करके दिखाओ, and this is actually they're interested in कि if we take a paper and tear it, they will only answer कि ये physical change है या chemical change है. Take a like matchbox and just burn a paper in front of them and you see them their interest, you see कि कितना वो आपकी क्लास में इन्वॉल्व होंगे. This is something they need, that the active learning. They expect faster feedbacks. They want कि अगर हमने छोटी सी भी चीज अच्छी की है तो मैम शुड अप्रिशिएट अस इन फ्रंट ऑफ द क्लास. अगर मैम ने डांटा है क्लास के सामने, something that we lack, maybe as a teacher, like sometimes it happens that in front of the whole class maybe we scold a student, but if that student is doing a basic thing in a very good manner, then we like maybe forget to appreciate in front of the class only. Like हमें लगता है ये तो छोटी सी चीज है, बच्चे ने क्या ही किया है, but sometimes that basic appreciation may build that strength or may build that confidence in the child. Then is there individualistic learners who also value real connections. That is something कि means they are the ones जो group में शायद learn करने से अच्छा उनको होता है कि अच्छा मैं आज ये करके आऊंगा, मैं I'll do this thing, I'll do that thing. Or you can say that emotional well-being is inseparable from learning readiness. That is कि nowadays we have to be, some you may say that we have to be like very careful about these kids कि they should be treated well. Something that you need to do is you need to make connection with these students, not in that manner ki yes I am a very strict teacher, I don't let my students talk in my class and that's the best thing that I know. No, class handling and discipline are two different things. Class handling में आजकल वो नहीं हो सकता कि आप गए क्लास में, बच्चे आपसे डर के बैठे हैं, and after that what will happen once your class is over, दे विल बी लाइक कि यू नो दिस टीचर ये मुझे पसंद नहीं है, ये मैम तो ऐसा करते हैं, मतलब लाइक बैक बाइटिंग थिंग्स हैपेंस. उसका रीजन क्या है? क्योंकि दी स्टूडेंट्स आर नॉट द वंस जो चुप करके बैठने वाले हैं. अगर आप इनको इन्वॉल्व करोगे ना तो मे बी आपको क्लास में कम बोलना पड़ेगा,
आपका टॉपिक पहले खत्म हो जाएगा। मीन्स आपसे ज्यादा ये इंटरेस्ट लेके आपसे 10 क्वेश्चंस पूछेंगे एंड यू विल सी योर टॉपिक इज ओवर अर्लियर, लाइक पहले ही खत्म हो जाएगा। इवन वॉट यू थॉट, जैसा आपने प्लान किया है उससे अच्छे वे से होगा। Modern teaching approach. Now, what is the modern teaching approach? Already we are discussing these points that move from the delivery to learning facilitation. Right now, what I am doing is I'm using a lecture method, which may be boring to every one of us, right? Because obviously, at this point of time, we can mostly go with the this lecture method only. But when we are with the students, when we are in face to face with them, when we are in front of them, so we should stop using only the delivery information method, because these kids are like, हम पढ़ के पता कर लेंगे मैम क्या होता है ये, हमें आता है ये, हम पढ़ लेंगे, हमने पढ़ा था। इवन देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास जो कहते हैं कि हम तो पढ़ के आए हैं, आप मतलब हमें जस्ट बताओ, हमें कुछ करवाओ। आपने कभी मतलब मे बी यू ऑल मस्ट बी हैविंग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट? सो आपने फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, सो इफ आई से माई स्टूडेंट्स ना कि हम ना कल लैब में जाएंगे, so now they wait for the next day and they make me remember कि मैम आपने कल ऐसा कहा था कि हम लैब में जाएंगे, अब आज लेके चलो। So basically their learning power, their observation power, their thinking skills are so high. The only thing is we need to tackle them. We need to know how to use that thinking. Then is integrated digital tools intentionally, not just decoratively. Now, what does this mean? This is something that integrate digital tools intentionally. That means कि कभी कभी ना हमें स्कूल में बोल दिया जाता है कि डू सम एक्टिविटीज, लाइक जस्ट हैव एन एक्टिविटी इन योर क्लास। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, कई बार हमारे पास भी टाइम नहीं होता, ऑब्वियसली सिलेबस कंप्लीशन इज वन ऑफ द टास्क दैट वी हैव टू कंप्लीट, बट देन अगेन हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हमने स्टार्टिंग में एक एक्टिविटी करवाई, दैट्स इट, उसके बाद हमारा लेक्चर मैथड शुरू हुआ एंड हमने चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया। Now, this is something using your digital tools decoratively, means just for the sake of using, हमें use नहीं करना है। Most of the schools में आजकल हमारे पास LEDs हैं, so why not to use those LEDs? हम उनको use करते हैं ना effective way में। Maybe हम जो इतना बोल रहे हैं उससे अच्छा है कि we can show those, visualize कर सकते हैं हम उन चीजों को, and visualization is the like one of the needs that these alpha generation needs. They visualize the things and they grasp it very quickly. Use micro learning and multi model instructions. That means कि आप छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दो उनको, छोटी छोटी चीजें इंस्ट्रक्ट करो एंड मतलब उनको ये कहो कि बहुत ज्यादा एक साथ करवाने से अच्छा है कि आप कुछ एक छोटी सी एक्टिविटी लो जिसमें आपको पता है कि यू कैन कवर अप द मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर, एंड यू सी those kids will just find out each and everything about from that basic activity. Build emotional safety. This is one of the major means non-negotiable foundation for today's teaching. If you want, your kids should connect with you. So if I basically say na, nowadays it's not like that कि बच्चे हमसे डरने चाहिए. Even they will, मतलब वो डरते हैं हमसे. But you should have a connection that you, obviously we as a teacher are smarter than our kids. So हमें ना एक ऐसा वाला bond set करना है बच्चों के साथ जहां पे उनको ये समझ में आए कि ओके, सो मतलब मैम से ना हम कोई भी बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, लाइक अबाउट आवर होम, अबाउट आवर फ्रेंडशिप, अबाउट एनीथिंग, but they should know that there is a thin line of difference between us and between them, that they shouldn't cross it, but they should be emotionally attached to us. Nowadays it's not like that कि बस हमने पढ़ाया, we went to the class and कि rather than every time thinking about how to plan an activity, why not to get an idea from the students? All of us are from like some other generations, we are having a generation gap with our kids, so maybe the ideas which like मतलब don't come up to our mind, हमारे दिमाग में कई बार उस लेवल के या वैसे वाले आइडियाज नहीं आते हैं जो उन बच्चों के माइंड में आते हैं। मतलब इफ यू गिव देम अ प्रॉब्लम ना, अगर आप उनको कोई प्रॉब्लम दो कि मैम दिस लाइक बच्चे दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग और दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई एम हैविंग, they'll give you n number of good and the best ideas जो हमने शायद सोचे भी नहीं होंगे। So this is the best technique to do with your kids, but this is only possible if we are having a good connection with our students. Like if we are having that much bond कि हमने आज कुछ कहा है तो उनको पता है कि मैम ने अच्छा आज ये चीज करने के लिए कही थी, तो I'll surely do it. This is something we need to make it. So if you are having an emotional bond with your students,
they are surely going to help you a lot. So मतलब आपका काम बहुत easy हो जाएगा अगर आप ये चीज try करो. So मतलब you may try this thing, must maybe you, some of you must be try doing it मतलब already. So this is something additionally you can do, that ask, or you may even do this thing. If you are having a chapter, maybe you are having like 3 to 4 topics or 10 topics, just divide it in the class and ask them कि okay, give me activities जो हम क्लास में परफॉर्म कर सकते हैं. And even they'll even मतलब they will be ready to even like bring that material, वो मटेरियल लाने के लिए भी रेडी हो जाएंगे. ये भी है. या फिर एक और ट्रिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द क्लास ऑफ 30, अगर आप किसी 2 बच्चों को कोई टास्क दो एंड आस्क देम कि ओके अगर आपने ये अच्छा किया तो नेक्स्ट टाइम आई विल गिव इट टू यू अगेन. और इफ यू से कि ओके बाकी सब ऑब्जर्व करना कि इन्होंने अगर ये अपना ये टास्क अच्छे से किया तो फिर आप में से किसी और को ड्यूटी मिलेगी. यू सी दोज किड्स विल परफॉर्म द ड्यूटी इन द बेस्ट ऑफ देयर मैनर, right? Okay, so next is smart teaching tools. Now, some of the smart teaching tools that you can add on in your teaching is YouTube videos that we all are doing, I guess, that we may choose one or the other topics which we feel like are मतलब can be better explained by visuals rather than just saying. उनको सिर्फ बोलने से ज्यादा अच्छा है कि उनको शायद देखा जाए तो it will be better. Then the QR codes. अब ना एक इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे QR कोडिंग देर आर मतलब क्विजेस जैसे ऑनलाइन क्विज होते हैं. सो देर आर लॉट मेनी. अब जैसे है इसके आगे ना आजकल QR कोड्स आते हैं एंड दे आस्क अस टू स्कैन एंड फाइंड आउट द टोटल आंसर की, और दे आस्क अस टू स्कैन एंड फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कशीट्स फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर. So जैसे holidays homework में if we talk about, or if we talk about some journal homework, we can build up a QR code for a worksheet, for a MCQs, for some videos, for some extra work if you want. You build up a QR code, share it in their homework, and you see उनमें इतनी excitement. Don't tell them कि what is the homework. Just ask them that this is the QR code that I'm sharing with you, and you just share it with your मतलब you just scan it and see what is inside. You will see कि if earlier 15 out of 30 used to do their work, now the ratio will increase. It will be like 20 or 25 जिन्होंने उस QR कोड को जरूर ओपन करके देखा होगा. Then is the online quizzes that we have, the best method for the practices, that you can go with the QR code, you can go with the online quizzes जो इजीली बिल्टअप हो जाते हैं. आपको उतनी मतलब शायद हम एज अ टीचर ना, हमारे लिए चैट जीपीटी जो है इट इज समथिंग लाइक मतलब हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हमने जस्ट बोला कि वी नीड दिस टॉपिक के 10 or 15 क्वेश्चंस एंड दे आर रेडी इन फ्रंट ऑफ यू, एंड इट विल इवन क्रिएट मतलब इट विल इवन क्रिएट अ लिंक दैट यू नीड टू शेयर. देन इज द डिजिटल व्हाइट बोर्ड दैट वी हैव. आजकल ना मतलब मे बी स्कूल्स में ये चीज अभी कम है, बट जो लाइक इंस्टीट्यूट्स हैं और द ट्यूशन सेंटर्स दैट लाइक जनरली वी सी, उनमें आजकल डिजिटल व्हाइट बोर्ड्स यूज किए जाते हैं. राइटिंग विद द लाइक मतलब वो एक rather than writing with the marker or writing with the, you can say, a chalk and a duster, they use some digital pens to write on it. So this fascinates the kids. They use different colors to like draw the diagrams, and even on the spot they want to see something, तो मतलब अगर कुछ दिखाना है बच्चे को, कोई पिक्चर दिखानी है, so it is easily possible. So if in your workplaces it is there, you may utilize it in the best possible ways. Then is the emotional needs that these generation alpha kids needs. The emotional, you can say emotional connection, the attention, appreciation, safety, understanding. These are what? Something happened in the class, आपने ignore किया, कोई बात नहीं, बाद में. या for example, you entered in the class, 2 of the kids came, they said, मैम इस बच्चे ने मुझे ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया. Sometimes हमें होता है कि हमें अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है, और कई बार हम बच्चे को unintentionally हम बोल देते हैं कि ओके यू गो एंड सिट, आई टॉक रिगार्डिंग दिस एट द एंड ऑफ द क्लास. एंड एंड ऑफ द क्लास समटाइम्स इट हैपेंस कि हम भूल भी जाते हैं उस चीज को डिस्कस करना. नाउ व्हाट यू डिड, यू निग्लेक्टेड दैट चाइल्ड, आपने उसकी बात नहीं सुनी. दिस nowadays these kids are like our kids. मीन्स अर्लियर ये होता था कि मे बी हम उतना बॉन्ड उतना कनेक्शन हम नहीं रखते थे, बट आजकल के बच्चों को ना हमसे वैसा वाला कनेक्शन चाहिए, एक मदरली कनेक्शन यू कैन से, कि मैंने कुछ बोला था मैम ने मेरी बात नहीं सुनी. इट हर्ट्स देम, इट एक्चुअली हर्ट्स देम. सो दे नीड दैट अटेंशन, they need that appreciation. Try this in your class, that you just appreciate every child on some basic thing.
किसी ऐसे बच्चे को जिनको हम कहते हैं ना कि ये तो कुछ करता ही नहीं है, या फिर मतलब ये तो पढ़ने में अच्छा नहीं है, या दिस किड इज नॉट डूइंग एनीथिंग, मैंने इतना ट्राई कर लिया, देन ऑल्सो ऑब्वियसली 1 और 2 इन द क्लास ऐसे होते हैं जो थोड़े ज्यादा मतलब यू कैन से शरारती होते हैं, जो हमारी बात नहीं सुनते हैं। अप्रिशिएट देम रेदर देन स्कोल्डिंग, रेदर देन सेइंग देम कि बैठ जा, यहीं पे बैठ जा, चेंज देयर सीट, नो। और रेदर देन सेइंग कि ठीक है मतलब नहीं पढ़ना तो रहने दो, ठीक है, नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है रहने दो, ठीक है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, rather than saying this, rather than scolding the class, rather than humiliating in front of the class, you just find a reason to appreciate that child, and you will see that that child will start doing wonders in your subject. वो मतलब बहुत अच्छा करने लग जाएगा आपके सब्जेक्ट में, बिकॉज समवेयर ना उसको होगा कि अब मुझे ना मैम को कोई रीजन नहीं देना कि वो मुझे डांटे। मतलब दिस इज समथिंग लाइक फॉर इन द क्लास ना आप उसको बार बार टोक रहे हो कि बच्चे डोंट टॉक, डोंट टॉक, बट देयर आर किड्स जो नहीं सुनते हैं ये चीज, सो यू गेट इरिटेटेड, समटाइम्स इट हैपेंस बिकॉज ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, but you may do one thing, ignore that child for like 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. What he will do, he'll keep quiet. Now for the next 10 or 15 minutes when he is quiet in your class, because he know that now you are not getting irritated, appreciate that child, that okay, so you did well today, ऐसे ही आगे भी क्लास में सुनना है, and well done, आज अच्छे से attention पे की। You see the very next day, maybe the child won't even speak when you enter in the class, the child won't even disturb you. Then is the safety, understanding. The safety, मतलब students should feel safe when they are talking to you. एक होता है ना कि आज क्लास में कोई बात हुई and you went outside, we discuss it in the staff room, we discuss it with our friend circle कि ये बच्चा ऐसा है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, या sometimes कोई बच्चा हमें कोई अपनी पर्सनल बात बताता है, कोई भी जनरली any of the personal thing a child shares, और हम unintentionally किसी और के साथ शेयर कर देते हैं उसको, एंड इफ द चाइल्ड गेट्स टू नो, यहाँ पे उस बच्चे को मतलब सेफ फील होना बंद हो गया। नाउ दैट चाइल्ड विल नॉट हैव फेथ ऑन यू, बिकॉज समवेयर जब दैट चाइल्ड टोल्ड यू द थिंग तो आपने ये कहा होगा कि मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी, आई वोंट टेल इट टू एनीबडी। नाउ बिकॉज द चाइल्ड गॉट टू नो दैट यू हैव टोल्ड इट टू समवन, maybe you have lost that matlab trust of the child. So this is something that you need to take care, that whatever happens in your class, this should be inside your class only. It should not go in a way ki okay matlab this is happening, that is happening in my class. No need to tell. Why to tell? This is my class, I know how to handle it. Try ki you should be, a teacher should be like कि मेरी क्लास में अगर कुछ हुआ है ना तो nobody should get to know, like unless it is like that you need to inform to the higher authority, something like that, obviously we need to. But then if something whatever is there, whatever like talk you had with your students, don't share it with anyone. Next is the common myths about today's learner. Now these are some things we talk about जो हमारा mindset बना हुआ है. First is दे आर ऑलवेज ऑन द फोन, हमेशा फोन ही चलाना है, हमेशा फोन ही यूज करते हैं, आप बस आपको तो इंस्टाग्राम ही चलानी है, वी यूज दीज वर्ड्स। नो अटेंशन स्पैन, ऐसा भी नहीं है कि इन बच्चों की अटेंशन नहीं है, नॉट एट ऑल। मैंने अभी बोला ना कि इफ यू ट्राई सम एक्टिविटीज इन द क्लास, अगर आप एक दिन पहले ये बोल के जाओ कि कल को ना मैं एक एक्टिविटी कराऊंगी, मार्क माई वर्ड्स, कल आपके आने से पहले वो 10 बार आपसे पूछेंगे। पहले तो वो आप पूछेंगे कि मैम आए हैं, बिकॉज दे आर नाउ इंटरेस्टेड कि यू शुड कम इन टू द क्लास, एंड देन वंस यू एंटर इन द क्लास all of them will be like कि they want to know what is the activity, what is the thing, what is that. So this is something that they are very good in paying attention. Only the thing is it should not be boring, the things should not be boring. Then is technology will replace a teacher, this can never be possible. मे बी हमें लगता होगा समटाइम्स कि यूट्यूब पे एन नंबर ऑफ टीचर्स आर देयर, आई हैव हर्ड इट समवेयर कि जो आजकल के बच्चे हैं ना, शायद वो हमसे लर्निंग मतलब पढ़ाई से ज्यादा यू कैन से, और आई मस्ट से कि जो बुक्स में उनकी नॉलेज है, बुक्स में जो उनका काम है, उससे ज्यादा वो हमसे कुछ और लेने आते हैं, दैट इज द इमोशनल कनेक्ट, राइट। जो फॉर एग्जाम्पल टीचर इज टीचिंग ऑनलाइन, उनसे हम इमोशनल कनेक्ट नहीं बना सकते, मतलब ऑब्वियसली द टीचर इज द ऑपोजिट साइड, यूट्यूब पे कोई भी, इट्स जस्ट दैट वो सुनेंगे समझेंगे एंड दैट्स इट, दे विल स्कोर गुड, बट
we as a teacher when we are with them in person, तो हम उनसे एक इमोशनल कनेक्ट सेट करते हैं जो कोई और उनके साथ कभी भी नहीं कर सकता. एंड दिस इज दैट्स व्हाई टेक्नोलॉजी विल नेवर रिप्लेस अ टीचर. सो these are the three myths that we should avoid, because phones ना एक्चुअली में, इफ वी से, आजकल टेक्नोलॉजी हर चीज में इतनी आ गई है कि ऑटोमेटिकली वी एज अ टीचर और वी एज अ ह्यूमन बीइंग, हम खुद ही फोन को मतलब छोड़ ही नहीं सकते. फॉर इंस्टेंस, अगर लाइट चलेगी, फोन चार्ज नहीं है, तो हमें पहले टेंशन ये हो जाती है कि माई फोन इज नॉट चार्ज्ड, हाउ विल आई वर्क विद, कैसे काम चलेगा. क्योंकि ऑब्वियसली हमारा भी कुछ ऐसा, जो काम पहले रजिस्टर्स के ऊपर होते थे, जो काम पहले अर्लियर वी यूज टू डू विद आवर हैंड्स, nowadays we are using our mobile phones to keep that same record. So this is something that nowadays generation change है, तो कुछ चीजें नहीं आएंगी. Obviously if I say कि अब अगर बच्चों को फोन नहीं चलाना आता, तो शायद हम ही होंगे जो कहेंगे कि अच्छा फोन ही नहीं चलाना आता, you don't know how to use a phone. This is something our wordings will be. So it's like these are the three myths that you need to take care. Okay, now an interesting thing that I want to ask you. So a simple maybe interesting, तो शायद नहीं होगी. Okay, so this is the picture. Just want to know that what method is being used in this. We have earlier discussed only, but what method is being used in this? Students are learning plants in a garden. Experiential learning. Experiential learning, learning by doing, rather than sitting in the class, hands-on activity, rather than sitting in the class and telling them or letting them know or saying them ki acha, you know how to plant a seed, you need to just have soil, you need to just put a seed into it, you need to cover it, you need to put water into it, you need to keep it in sunlight. Why don't we practice it? Why don't we take the students out? It is a change. रोज रोज सेम क्लास में बैठ के, रोज रोज सेम क्लास में बैठ के, मतलब इमेजिन अ स्टूडेंट्स, मतलब आप सोचो, अभी इट्स आई गेस अप्रोक्सीमेटली 45 minutes ऑफ द सेशन दैट वी हैव कवर्ड. और ना अभी भी मे बी कुछ मतलब ऐसे होंगे, ऑब्वियसली मतलब हमें बैठना मुश्किल हो जाता है कि इतना हम कैसे सुने, इतना टाइम हो गया, हम कैसे बैठे. You imagine a child sitting for from like morning 8 o'clock till the end of the day, till मतलब like 2 o'clock, right? Approximately 6 to 7 hours उसी जगह पे बैठ के, एक टीचर आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, फिर जाएगा. This is something that happens. बोरिंग हो जाता है उनके लिए, बहुत बोरिंग हो जाता है उनके लिए. समटाइम्स इवन वो कहते होंगे ना, एंड लेक्चर तक तो वो ऐसे होते हैं, मैम रहने दो, मत पढ़ाओ, हम आज बहुत बोर हो चुके हैं, हमने बहुत पढ़ लिया. मतलब व्हाई डोंट वी, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कोई एक एक्टिविटी भी छोड़ो, चूज अ गेम टू टीच द यार स्टूडेंट्स. दुलार नोक देखावल जाला. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आई हैव सीन, लाइक मैंने एक रिसेंटली एक एक्टिविटी देखी. इट वॉज कि नाउन्स टीच किए थे बच्चों को, राइट? सो नाउन्स को कैसे टीच किया गया, उनकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए द टीचर हैज टॉट द नाउन्स. अब अगर क्लास बोरिंग हो रही है, व्हाट कैन वी डू? क्या किया गया, बोर्ड के ऊपर ना, मतलब एक वो बना दिया, क्रॉस एंड क्रॉस जीरो वाली जो गेम होती है, वो बनाई गई. एंड मतलब टू स्टूडेंट्स वर देयर, दे वर प्लेइंग. what was said, the teacher was speaking like you can say a word. For example, if I say cow, if I say like bed, if I say book, if I say mobile phone. So now मतलब दोनों में से जो भी पहले आंसर करेगा कि what type of noun it is, उस बच्चे को टर्न मिलेगी उस गेम में अपनी एंट्री करने के लिए. मतलब इट कैन बी क्रॉस एंड जीरो गेम जो होती है, तो मतलब उस वे से नाउ दे वर एक्चुअली वेरी क्विक इन आंसरिंग, क्योंकि उनको था कि मेरी टर्न आ जाए, मेरी टर्न आ जाए, आई शुड विन, आई शुड विन. नाउ व्हाट हैपेंड, द क्लास एंजॉयड. The teacher said ki we are just playing a game, but in that game they actually practiced or they actually revised the types of nouns, and they got lot many different examples. So this is how you can make interesting, and you can ask your students, you can involve your students, the gen alphas that we have. Okay, so maybe, hopefully, matlab the session that we are coming at the end of this session, you must have got some or the other thing. कुछ पूरे सेशन में से बहुत कुछ आपको ऑलरेडी पता होगा, बहुत कुछ आप लोगों ने मतलब ऑलरेडी ट्राई भी किया होगा, बहुत कुछ आप लोगों ने दूसरे सेशंस में भी सुना होगा. But out of all these things, maybe in these 50 minutes, you must have got something new in that 2 or 3 minutes of time. So just want to ask you that what will you change in your teaching from tomorrow? Like what something after this session you feel like you need to change in your teaching?
More of a practice-based teaching than lectures. Okay, so matlab adding on, or you can say increasing the practice-based teaching rather than just going with the okay. Then Learning by doing or hands-on activities. learning by doing and hands-on activities, right? Anything else that you are going Being to change? being excuse me, being more emotionally connected with the students than being a Yes, strict being more teacher. right. So being strict and being emotionally connected can be balanced. Anything else? Okay, More so interactive with the hopefully students. more interacting because matlab what I feel na, if we'll interact with the students, you will feel that ki they will only tell you ki how they want to learn. Somewhere they will only tell you how they want to learn. Okay, so our today's major takeaway is that teaching these Gen Alpha is a gift, not a burden. Sometimes we feel like ये respect नहीं करते हैं, ये तो ऐसे बोल देते हैं, means like they are not even listening to us, they don't understand us, they मतलब they don't pay attention in the class. Maybe because we are from a generation जो ऐसे बैठ के टीचर की बातें सुन लेते थे. But obviously हर चीज में चेंज आता है, बच्चों में भी चेंज आया है, सो वी ऑल्सो नीड टू चेंज अ बिट. सो एट द एंड थैंक यू सो मच एजुकेटर्स. फीडबैक फॉर्म जो है फॉर दिस सेशन, तो आई एम नॉट शेयरिंग द फीडबैक फॉर्म, राइट? Yes, appreciating them side by side, that's very true. So just want to know in the chat box only if you want any of the questions are there you want to ask me, just a question answer session if we can have. यस सर्टिफिकेट आई लेट यू नो. हाँ जी. जी मैम, जो आपने बातें की है ये तो 100% ठीक है, इसमें किसी किस्म की कोई जो है दूसरी राय नहीं हो सकती कि हैंड ऑन एक्टिविटीज होनी चाहिए, लर्निंग हाँ बाय जी. डूइंग होनी चाहिए। हाँ ये जी. बातें तो बिल्कुल ठीक है और आप हैं, लेकिन एक बात जो ग्राउंड लेवल पे मिलती है वो ये है कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं हाँ वो जी. कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, कि उनकी जो है वो लाइफस्टाइल कैसा है, क्या वो अपने आप को गुर्बत की लकीर से अच्छा खासा ऊपर ला सके हैं, या वो लोग जो अनपढ़ हैं या और उन्होंने कोई स्किल सीख ली है या स्कूल छोड़ दिया था और स्किल सीख ली है और आज वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, या हाँ फॉरेन जी. कंट्री में जाकर वो लेबर कर रहे हैं तो वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो क्यों ना हम उसी हाँ चीज को कॉपी करें जिसको जो एक जो है ना अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ जा रही है, बजाय इसके कि हम जो है वो इतनी मेहनत भी करें और उसके बाद जो है ना हमारी कोई ऐसी लाइफ ना बने जो एक पढ़े लिखे लोगों की लाइफ उनके सामने नजर आ रही है, तो इसको हम कैसे एक्चुअली कॉप अप कर सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ सर. एक्चुअली पता है क्या है, मतलब वी नीड टू टेल द स्टूडेंट्स कि हमें चीजें शॉर्ट टर्म नहीं देखनी होती हैं, राइट? क्योंकि कोई भी स्किल है, देखो कोई भी स्किल है, वो आज बहुत अच्छा चल रहा है, हो सकता है कि अपकमिंग 10 ईयर्स के बाद उस चीज को ना पूछा जाए, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्लियर यूट्यूब कितना का चलता था, मतलब अर्लियर जो यूट्यूब पे टीचर्स हैं या फिर जो अगर हम जनरली बात करें यूट्यूब के जो भी मतलब कंटेंट मेकर्स हैं, हमें शायद उनके बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं थी. नाउ अ डेज दे आर लाइक मतलब अर्निंग अ लॉट, मतलब अर्निंग अ लॉट इवन मोर देन अस, राइट? So they need to understand कि somewhere this education is important because वो हमें हर point of time पे life में काम आएगी. At the end अगर देखो skill is something we can say कि skill आजकल के लिए चाहिए ही चाहिए. ऐसा तो है नहीं कि without skill we can go with, because we know कि जब तक हम confident नहीं है even job के time पे भी शायद हमारी डिग्री से ज्यादा आजकल हमारा skill देखा जाता है. बट स्टूडेंट्स को इस चीज से कोप अप करने के लिए या इस चीज से अंडरस्टैंड करवाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट मेक देम अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट लाइक दैट कि यहाँ हाँ बच्चे होते हैं, इवन आई हैव फेस दिस प्रॉब्लम कि मैम आप कितना मतलब लाइक हाउ मच यू गेट हियर, आप मतलब पढ़ते हो, आपने इतना पढ़ा है या आप मतलब इतनी पढ़ाई कर चुके हो तो आप यहाँ पे क्यों हो, दे आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. बट समटाइम्स ना दे आर किड्स, दे डोंट नो द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड. व्हेन दे एंटर इनटू दैट they'll get to know कि this is why we are here or this is how we are having this means thing. So skill equally important है, but we need to know that the teaching or the education that we are giving them is much more important than that skill. This is how you can cope up with the students. I hope you must have like got something from the session. And about the certificate, I'll let you know, right? And thank you so much.
any of the things, if you feel like I must add in my teaching or I must add in my sessions, you may just message me or you may just share it with me in the chat box. I'll feel very good that if I'll be like you will be correcting me somewhere. Okay, so thank you so much. I'll be ending up the session. Thank you, ma'am. The session was really wonderful and very informative. Thank you so much. Thank you so much.